गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब वक्त है कि जो हमने सीखा उसको प्रेजेंट करने का। तो पहली टीम से कोई एक सदस्य आ जाए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करे। पहली टीम का नाम है नॉलेज नेविगेटर। अगर नेक्स्ट टीम रेडी है विजडम वॉरियर्स, तो आप उसमें से कोई एक पार्टिसिपेंट आए। सेल्फ वॉलंटियर प्लीज अनाउंस Good morning, respected ma'am, sir, and distinguished experts, faculty members, and all the participants. It is my privilege to present a brief summary of Atal FDP development program. This FDP is designed to help educators understand how the digital revolution is transforming business, education, research, governance, and society. The program emphasizes that faculty members are key drivers of digital transformation and that continuous professional development is essential for preparing students for the future. During the first 5 days of this faculty development program, we explored how digital transformation and artificial intelligence are reshaping education, business, research, and society. Each session was enriched by discussion on recent research articles, enabling us to connect theoretical concepts with real-world applications also. The program emphasized that digital transformation is not merely about adopting new technologies, but about creating innovative, ethical, and sustainable systems that improve teaching, learning, and research institutional governance. Throughout the FDP, we gained valuable insight into several emerging digital transformation, blockchain, Internet of Things, Industry 4.0, digital marketing, digital analytics, and cyber security. One of the most significant learning was that artificial intelligence has the potential to transform education by personalized learning experiences, improving assessment practices, supporting researches, and streamlining administrative tasks. However, the FDP also reminded us that AI should be used as a supportive teaching partner while maintaining ethical standards, academic integrity, and transparency and human values also. Another important takeaway was the growing role of digital platform in education. Learning management system, virtual classroom, online assessment, and collaborative digital environment. The program also highlighted the importance of digital personal data protection, cybersecurity, and ethical technology use. As educational institutions increasingly rely on digital systems protecting students and teachers, data has become a fundamental responsibility. Strong cybersecurity practices and responsible digital governance are essential for building trust and ensuring the safe use of AI, other emerging technologies. The knowledge gained through this FDP has significant implications for educational institutions. First one is technology-based institutions should be integrated AI digital platform and smart technologies into teaching, research, and administration and student services. Next, research excellence. AI-powered research tools, digital database, and analytics can improve the quality, productivity, and global visibility of academic research.
interdisciplinary education, emerging technology should be integrated across all disciplines, encouraging innovation, collaboration, and problem solving. Overall outcome for the faculty members, these 5 days have empowered faculty members to integrated AI and digital technologies into teaching, learning, and assessment. Conduct high quality research using AI supported tools and digital platforms. Design innovative, inclusive, and student-centered learning experience and continuous professional development. Prepare students with future-ready knowledge and skill aligned with NEP 2020 and Industry 4.0 and Education 4.0. In conclusion, these 5 days have demonstrated that technology is not replacing teachers, it is empowering teachers, and digital transformation is successful only when it is guided by the human values, ethical practices, and a commitment to lifelong learning. By embracing artificial intelligence, digital innovation, and responsible technology use, educational institutions can create inclusive, innovative, and research-oriented and future-ready learning ecosystem. In last, a lamp that continues to burn is the only lamp that can spread light. Similarly, only a teacher who can continues to learn can truly enlighten students with knowledge. The faculty development program has reminded us that learning is a continuous journey where, as educators, when we keep updating our knowledges and embracing new technologies and strengthening our values. With this thought, I sincerely thank all the respected experts and organizations, coordinators, and participants for making this learning journey meaningful and inspiring. Thank you so much. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा समझाया। मुझे लग रहा है कि आपका यही दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड थे लर्निंग के समय। नेक्स्ट टीम है क्वांटम माइंड्स। मैं चाहूँगा कि वेलकम तो कर सकते हैं हम लोग तालियों से। Very good afternoon to everyone who are presented here, and I'll make it short that from the point of view of Quantum of Minds, I would like to thank everyone for these especially 7 days, and I would like to present a brief summary of the 7 days faculty development program on harnessing the digital revolution for business education and societal sustainability. This FDP focused on how digital transformation is reshaping 3 critical domains, which is basically your business, education, and society, and how as an academicians and professionals can effectively we adapt these changes. During this program, we have explored many emerging technologies such as AI, that is artificial intelligence, big data, blockchain, and some digital platforms as well. And they are revolutionizing the business models which enhance their operational efficiency and also enabling the data-driven decision making. This session highlighted the importance of various types of digital innovation for the competitiveness and the sustainability in today's dynamic environment. As well as in the context of this environment of education, this FDP has shifted towards digital learning ecosystem, that is e-learning platforms, MOOC, blended learnings, and the integration of technology in various types of pedagogies. It also encouraged faculties to adopt interactive tools and learner-centric approaches for enhancing engagement and various types of learning outcomes. So a key focus area was societal sustainability, where discussions have been made that how digital solution can address social challenges like financial inclusion, its literacy,
healthcare accessibility, environment sustainability, and various digital governance. The role of digitalization in promoting inclusive growth and bridging the digital divide was also highlighted. In short, overall the FDP provided valuable insights into leveraging digital tools for innovation and efficiency, enhancing teaching learning processes through technology, using digital transformation as a driver for sustainable development. And in conclusion, I can say that this program reinforced the idea that embracing the digital revolution is not just an option, but a necessity for building a resilient, inclusive, and sustainable future. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Next team, Techno Thinkers. Good afternoon, everyone. On behalf of my team, Techno Thinkers, I am here to present the summary of the articles and key learnings from all the sessions we have attended during the Atal FDP program. The sessions were very insightful and informative to us. We learned how AI and blockchain and IoT are helping businesses and other sectors to work smarter, faster, and more securely. We also understood that the Information Technology Act 2000 provides the legal framework for electronic transactions and cybersecurity, data protection, and cybercrime laws in India. The sessions explained how automation and human-robot collaboration are transforming manufacturing and preparing industries for the future. We gained knowledge about bibliometric analysis, its types, quantitative and qualitative, data sources, local and global citations, and its importance in research. We also learned the basics of digital marketing, its channels, consumer psychology, and how AI is transforming modern marketing. In addition, we also learned how to use AI-generated images, informations in our research in more ethical way, and how AI tools can help earn income while saving time. And we also learned the difference between a program and a course, along with how to develop a course curriculum framework using AI, aligning it with the demand of Industry 4.0 and Society 5.0 plus New Education Policy 2020. Thank you. थैंक यू मैम, आपने काफी कम समय में बहुत अच्छा समझाया कि हमने क्या क्या सीखा पिछले 5 दिनों में. थैंक यू. नेक्स्ट टीम है डिजिटल सस्टेन. A very warm good afternoon to everyone. The room is chilling. I am from the group DigiSustain. We have 4 members, technically 5 members, but 4 of us are here, and we have gone through all these 12 sessions that were held, and all 4 of us have discussed. So on behalf of my group, it's a privilege to share a quick reflection of the 13 sessions that have been held over here till now. Honestly speaking, our minds are full, and I must say, those who are noting down, their copies must be full. So it's a very good session going on, and what struck all 4 of us is the sheer range of expertise that is there with all the experts that came over here. All those who came over here, they were the experts, whether it was from digital transformation, whether it was digital marketing, whether it was from the field of cyber law, whether it was today's session about the how we can save ourselves from what all is happening in our today's environment.
starting from the first one, it began with Dr. Arun Mohan Sherry. What we all have taken back, not only my group, I think you'll agree with me. One statement that sir said, opportunity lies in problems. What we do is we make things complicated. He told us not to complicate and to make it simpler. So it's the tagline that we can take from his session. Next was Professor Praveen Shukla sir from, he has opened our eyes to the emerging technologies that is helping us in business, that is going to help us, we academicians also, how we are going to carry out in our classrooms and how we are going to tell our students to be aware of AI and how they are going to handle it. Next we had Professor Ravi Prakash sir, who took us into Industry 4.0 about the smart machines, about the robotics. Then we had Professor Salish sir. He very nicely he told us about how to do the bibliometric analysis, and most of us were aware of it, but still we got the insight how we can carry over it. Next we had Mr. Jayant sir, who revisited digital transformation from a fresh, grounded lens, and then Dr. Naresh Gupta sir, the session which was a live session of how we could earn. All the sessions were teaching how we should go about it. One session, how we can make money, how we can make money also with that. Then after sir, we had Professor Amita, Amita ma'am, who told us very nicely about how to develop our course objectives, how actually what we as academicians need, how we have to focus on the course objectives, how we have to focus on the program objectives, and it is not the vice versa that we prepare our content and then we go on the objectives. She very clearly told it how what is the algorithm or what is the flow chart that we must follow. And today finally we had sir who actually told us कि हम किस net में फंसे हुए हैं जहाँ पर at every jiffy of a second our phone, our passwords, our CVVs is at risk. So he very nicely told us how to be aware and how we can be protected. So this was about the 12 sessions that we have gone through, and all were the best we could gain, and the credit goes to NPGC, especially Department of Management, Dr. Nidhi, Head Department की जो हमारी Dr. Nidhi ma'am है, and Department of Computer Sciences Head Dr. Shanli Lamba ma'am, and obviously the team with all the team members who have done this. And yes, the tea and the lunch is very nice, and we are hoping for further next week also. And for this, the credit goes to the best hospitality manager, Dr. Rinku sir. Thank you so much, sir. And we hope that in the next week also we are going to get the best what we can carry and what we'll be able to follow in our academic journey as a learner and as a teacher also. Thank you so much. थैंक यू मैम सेशन वाइज लर्निंग्स बताने के लिए, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट टीम को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उसको सब पता है कि क्या क्या हमें बोलना चाहिए. तो नेक्स्ट टीम है इम्पैक्ट इनोवेटर्स. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say a warm thank you to everyone here, especially this college. You don't know how much you have made us learn in just these 7 days. I mean, I don't know how much. When was the last time we have learned in such a dynamic way? Like on the first day. You have made us learn about AI, the whole theme of the FDP that was based on, and on the next day we are learning about the cyber attack. Other session, it's just like you're making us know about the digital curriculum, how to make the digital curriculum, like such a diverse.
I mean, you have covered every aspect that we can learn from here. I mean, nothing is left it out, I think. So, first of all, thank you on behalf of all of us. So, I'll talk about the sessions, the articles we have discussed in the sessions that have been held. So, so the first session, where the big thing we have learned is that when there is a problem, there is an opportunity. I think this is the key take we will take from here. I think this is a lifelong learning we have taken from here, that when there is an opportunity, when there is a problem, there is an opportunity. And the sessions, like we have come to know that about AI, IoT, blockchain, how these going to improve organizations and logistic efficiency. Other than that, how these tech adaptation will add to the customer value generation, and in a way how the economy will going to be developed in a more sustainable way, and what will be the future that we're gonna see in next upcoming 5 to 10 years, what the transformations that will going to happen. So yes, this was also eye-waking for all of us. Other was very important, that was related to digital marketing. How the digital marketing is taking place, how the all the key supply chain is working, how the organization is doing their work, how they're adapting the technology basically. The next was related to DBT. The sir has talked about the direct benefit transfers, e-wallet, Aadhaar-based payment, and all the financial inclusions that have been going to take place. Also, the next session was about the digital twin, enable real-time control, was also eye-waking for all of us. I think I was not aware of how the digital twin actually works. So that was also very helpful and was the key takeaway from there. Overall, I will like to say that the scenario is going to change completely. The upcoming things is the way we are going to adapt the technology. The upcoming things that are going to happen is something we can say. The sir has also told that change is only constant. We have to adopt it. And I think yesterday or day before yesterday, we have talked about lifelong learning and lifelong lessons. So yes, at the end, I would like to say that we will adapt. We don't have to only adapt this technology, but also we have to adapt with responsibility and most ethical way. So thank you. थैंक यू सो मच मैम। असल बात यह है कि हमें सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं है कि पढ़ाना है, या फिर मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी हम रोज चीजें देख रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे बुक्स हो, उनका हमारी लाइफ में कितना यूज है ये भी जानना जरूरी है। तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट है सिनर्जी स्क्वाड। Good afternoon, everyone. I am Vishal and representing the team Synergy Squad. And as we know that the main theme of this FDP is related to emerging digital technologies. So the most of the discussion and articles are related to the role of emerging technologies in business, education, and research and society. So we have got to learn about the many new technologies like AI, digital transformation, digital marketing, different type of digital marketing strategies, IoT, blockchain, Industry 4.0, and what are the different components of Industry 4.0. We have also learned about Society 5.0, how to develop the curriculum, different cyber laws, cyber securities. We get to learn different examples, real life examples of related to cyber securities and
cyber laws, data privacy, and most of the discussions and articles was also focused on these topics. And we not only get to learn about new principles and practices, but we also discuss how we can apply those in our domain. And there are many new learnings from this FDP, and I would like to thank the entire organizing team for this FDP, and thank you. थैंक यू सो मच सर. नाउ फर्स्ट टीम जो लास्ट नंबर पे आ रही किसी कारणवश, तो प्लीज वेलकम. नॉलेज नेविगेटर्स. Good afternoon, everyone. Thank you so much for giving me opportunity to speak. I am talking about behalf of my team, Knowledge Navigators, and I would like to present all 5-day summary which I have assessed during my exercise. During this FDP, we explored research papers on digital transformation, AI, that is artificial intelligence, digital marketing, digital payments, sustainability, data privacy, and other emerging technologies. Although these papers focused on different topics, they all conveyed one common message, and that is digital technologies are fundamentally transforming organization, business, and society. One of the key learning that was digital transformation is much more than adopting new technologies, is involving redesigning organizational process, improving customer experiences, building digital capabilities, and creating long-term values. Technology alone cannot ensure success. Effective leadership, organizational culture, and continuous innovation are equally important. Another important insight was the growing importance of data. Today, organizations using customer data, analytics, and AI to understand behavioral, personalized services, improve decision making, and enhance operational efficiency. This shows that data has become one of the most valuable asset for our strategic resources in the digital economy. The paper also demonstrates how AI is transforming sectors such as healthcare, education, transforming sectors such as healthcare, education, manufacturing, finance, logistics, and marketing rather than replacing humans. AI supports better decision making, predicts future outcomes, and automates routine tasks. Technologies such as blockchain, IoT, and digital twins further illustrate how digital innovation can improve productivity while also supporting sustainable development. At the same time, these studies remind us that technological advancement must be accompanied by ethical responsibility issues such as data privacy, cyber security, intellectual property rights, and responsible AI governance are becoming interestingly important. Innovation creates long-term value only when it is ethical, secure, and socially responsible. As a research person, or as a mentor, or as a professor, my biggest learning from this FDP was that technology should not be studied in isolation. Instead, emerging technologies are interconnected and increasingly require an interdisciplinary and evidence-based research approach. To conclude, all these papers highlight a common vision: the future belongs to organization and researchers
who can effectively integrate digital technologies with sustainability, ethics, and continuous innovation. And continuous innovation, digital transformation is not simple about adopting technology, it is about creating lasting value for business, society, and future generation. Thank you so much, and thank you so much team National College who has given this platform to get so much knowledge from here. I always remember this experience is like a lifelong learning experience from me. Thank you so much. थैंक यू ऑल टीम्स। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने लिए भी तालियां बजा दें। आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। कोशिश करेंगे अगली बार और अच्छा करें कुछ, अगर आप ऐसा कुछ हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। और जो अभी कोर्स के लिए वर्कशीट दी गई है करिकुलम डिज़ाइन वाला, जो डिजिटल रेडी करिकुलम जो वर्कशीट है, वो आपको 4 बजे बाद जमा करनी है। 4 से 5 का आपका सेशन होना है, तो आप उस समय अपना रेडी करके सबमिट कर दीजिएगा। हाँ, आज ही, ठीक है, आज ही सबमिट करना है। और आपका लंच वेट कर रहा है, अभी गर्म है तो खाने लेकर। थैंक यू। I hope you all found the first session is very technical and informative for all of you. And once again, I want to extend my warm welcome to all of you in today's session, today's expert session. And it is now my privilege to invite our respected Dr. Shanli Lamba ma'am, HOD Department of Computer Science, and Dr. Nidhi Srivastava ma'am, HOD Department of Management, to kindly come forward and felicitate our esteemed resource person, Professor Dr. Ravins Porwal, with plant and a memento as a token of gratitude and respect. Thank you, ma'am. It is now my pleasure to introduce our distinguished resource person, Professor Dr. Ravins Porwal, for today's session. Dr. Porwal is a professor and head, Department of Computer Applications, School of Engineering and Technology, Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, with over 24 years of rich academic and research experience. He is a renowned academician, researcher, and educator, actively associated with prestigious professional bodies including IEEE, ACM, CSI, ISTE, and ISCA. Throughout his renowned career, he has received numerous prestigious recognitions, including Best Professor in Computer Application Award in 2026 and the Universal Innovator Leadership Award in 2024. For his remarkable contribution in higher education. Dr. Porwal has published more than 70 research papers in a reputed journal, authored books on AI and data science and machine learning, filed 8 patents, and delivered over 35 keynotes and invited lectures and guided several PhD scholars. Today's session focuses on a topic that is transforming a landscape of education, a new era of teaching, e-learning, learning management system, gamification, and AI-powered adaptive learning in education. So on behalf of National PG College and all the participants, I extend my warm welcome to you, sir. And we are eager to learn from your vast experience. So thank you, sir, and the stage is all yours. Thank you. Thanks for such a introduction actually to what I say. And thanks Dr. Shanli Lamba and for inviting me, Dr. Nidhi Srivastava, Dr. Rinku Raheja, and Dr. Amit Srivastava
I know. So thanks for inviting me for this this lecture in this Aptal FDP, and the topic is very easy to understand, and I hope you all will be using all these things like e-learning. Everybody is knowing what is e-learning, what is gamification, what is learning management systems. So it is nothing difficult, not so hard to understand. I'm just going to share what are the practicalities, means how you can use the learning management system. And आप सभी जो participants यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने participate किया हुआ है, so from the day when I think it started from 13th of July, right? So many eminent speakers, they have visited and they have shared a lot of things related to the topic of the FDP, and you would have learned a lot of things, lot of technicalities, lot of technical things, कुछ नॉन टेक्निकल भी होगा, ठीक है. मैं थोड़ा सा डिस्कस जो करूँगा वो आपको प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, एंड कैसे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, किसी लोगों ने आप लोगों में से कभी किसी ने कोई LMS पे कुछ काम किया है? कुछ अगर पहले से पता हो तो बहुत अच्छा होगा. कोई LMS पर किसी ने कोई काम किया हो, यूज किया हो? कौन सा? सर, फॉर इग्नू LMS. हाँ, इग्नू LMS. वो किस पे बना हुआ है? अच्छा. और किसी ने कोई? हाँ, मूडल किसने बोला? आपने यूज किया हुआ है? दैट्स ग्रेट. और भी कई सब बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट हैं. मैं कुछ वीडियोस हैं, हालांकि वो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल गूगल पे आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे. मैंने भी वहीं से लिए हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ, लेकिन वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होंगे. बाकी मूडल पर, क्योंकि मूडल में पिछले करीब 10 साल से यूज कर रहा हूँ LMS, है ना. फॉर द लास्ट 10 years व्हेन आई वाज इन LBSIM, तो वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था Moodle, and then we started using, and it is really helpful to all of you. You as a faculty, you as a research scholar, you as a PG student, right? And you can organize the things there very easily for the student point of view. आपको अपना assignments, notes, सब कुछ वहाँ मैनेज कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन क्विज लेनी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हैं. ये फ्री है मूडल. थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा सा उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि उसके लिए एक सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट LMS इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको सर्वर पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. देन उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, राइट. तो एक मूडल पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देन चलो स्टार्ट करते हैं कि पता नहीं, ये तो दीदा 51 स्लाइड्स हैं. अगर मैं सब ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगेगा, आपको भी बहुत अजीब सा लगेगा. सो एवरीबडी इज बिकॉज एवरीबडी इज लिसनिंग द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस इज बज़वर्ड नाउअडेज. AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स. और फिर ये एनालिटिक्स आजकल हर एक के साथ जुड़ गया है, ठीक है. चाहे वो सप्लाई चेन की हम बात करें, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, या हम किसी भी डोमेन में जाएं तो पहले जो वर्ड एनालिसिस हुआ करता था वो आज एनालिटिक्स हो गया है. क्यों हो गया एनालिटिक्स? क्योंकि क्या है कि जब हम उसको यूज करते हैं इस पर्पज कि वो कहीं ना कहीं हमको कुछ एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके, राइट, बाय अप्लाइंग सम एल्गोरिथम्स. जो एल्गोरिथम्स आज AI में यूज हो रही हैं वो स्टैटिस्टिक्स की एल्गोरिथम्स हैं, सभी को पता है. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम 20 साल पहले स्टैटिस्टिक्स बहुत कम लोग पढ़ते थे और यूज भी बहुत कम करते थे, क्योंकि डेटा के साथ उसमें बहुत सारा डेटा, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैलकुलेशंस. बट विद द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है, नाउ दैट कैलकुलेशन हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि वो कंप्यूटेशन, अब वो सारा काम आपको पेपर पे ना करके वो सारा काम एक्सेल शीट में आपने डेटा दे दिया, उसको उस पर एल्गोरिथम अप्लाई की और उसके बाद यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स. और वो आजकल सब कुछ जनरेट हो जाता है, ग्राफ वगैरह सब कुछ. जो टेस्ट एनोवा जो आप उसमें पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में, वो अब आप सीधे
बस उसमें डालिए, एक फंक्शन कॉल करिए डेटा पर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज द एप्लीकेशन। आज जो मशीन लर्निंग है आप उसे कह सकते हैं कि वो एक एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स का, जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले लोग वाग उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते थे। पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आती थी। जो एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले एआई बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है एआई पावर्ड एडेप्टिव लर्निंग, ठीक है। क्योंकि आजकल चाहे वो टीचिंग हो या लर्निंग हो, बिना एआई के कोई भी यूज नहीं कर रहा है। और वो एआई का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डोमेन हो जहां यूज नहीं हो रहा हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो। सो एआई टूल्स का एप्लीकेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर एक्चुअली, ठीक है। और वो बहुत कैसे हम लोगों के उसमें आ गया है धीरे धीरे वो हम लोगों को ही नहीं पता, और हम लोग कितने सारे एआई टूल्स को डे बाई डे यूज कर रहे हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। चैट जीपीटी सभी लोग यूज करते हैं, गूगल सभी लोग यूज करते हैं। गूगल भी आजकल एआई इनेबल्ड हो चुका है, ठीक है। आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उसमें मेटा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी, आजकल लोग मैसेज, सिंपल मैसेज भी खुद नहीं टाइप करना चाह रहे हैं, बस वो आपने, बल्कि आजकल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हाउ टू यूज ऑल दीज थिंग्स, द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। हाउ टू राइट, क्योंकि जितना ये क्या है, इट्स अ टूल एक्चुअली। आप जितना अच्छा उसको समझा सकते कि आपको क्या चाहिए है, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जितना अच्छा आप पूछोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर भी जैसे जैसे आप, ये क्या है, एक टूल है जिसको कि आप, जैसे आप छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कैसे ये टूल ग्रो करता है विद द यूज, क्योंकि जितना आप अधिक यूज करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चा छोटा होता है, उसको कुछ भी नहीं आता, ना लैंग्वेज, ना उसको बोलना, ना समझना, लेकिन वो कैसे सीखता है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। अपने पेरेंट्स ने उसको कुछ बोला, कुछ समझा, तो उसको समझ में आया कि हाँ, उन्होंने कहा जाओ उधर, उधर जाओ, ठीक है। तो उसको समझ में आया कि उधर जाने के लिए कह रहे हैं, तो उसकी जो ब्रेन है उसमें ये भर गया कि हाँ, हमको वहाँ सिग्नल आया उसमें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको आप समझाते हैं, बताते हैं, उसका डेटाबेस बढ़ता जाता है। ऐसे ही ये भी है एआई टूल। द मोर यू यूज, द मोर effective it will be for you later on to get the better results. So चलो स्टार्ट करते हैं पहले से कि ई लर्निंग क्या है। What is ई लर्निंग? आपकी जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि ई लर्निंग से हम ये समझते हैं या वो समझते हैं। लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, राइट, लर्निंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक पार्ट हो गया। और When learning is via digital mode. Via digital mode, the same thing. asynchronous learning, Synchronous, asynchronous learning, right? ये सब चीजें जितनी आपके दिमाग में आ रही हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सब चीजें ई लर्निंग है। मैं आपको बता दूं, मतलब डिजिटल मीडिया को यूज करके, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं या उसको यूज करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, उस पर जो कंटेंट आप रीड कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट आपका टेक्सचुअल फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है, विजुअल फॉर्म में है, ठीक है, समटाइम्स मैसेजेस की फॉर्म में है, समटाइम्स मिक्स ऑफ है, ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें ई लर्निंग में आ जाती है। मीन्स लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा आपने बताया, ठीक है। अब जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे ही एक वर्ड बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई।
हमको उससे रिलेटेड एक सिस्टम चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अब वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चीजें, व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, कितनी उसकी बैंडविड्थ चाहिए। मान लो हमारे पास बैंडविड्थ बहुत कम है और हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं, राइट। तो मतलब उससे रिलेटेड, उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कितनी सारी चीजें वो चाहिए हैं, क्या क्या, वो सब इसकी स्टडी में आ जाती है। इसलिए ई लर्निंग बहुत वास्ट एक तरीके से हो गया है। अब इसी में एक वर्ड आ जाता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया कि जैसे इग्नू ने, आप ऑनलाइन यदि कोई भी कोर्स करेंगे इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मोड में या डिजिटल मोड में, तो वो एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये एक इनफॉर्मल नेम आप कह सकते हैं उसका, जहां पर कि यू विल बी गिवन द स्टडी मटेरियल टू रीड, टू रेफर इन डिफरेंट फॉर्म्स। PDF है, PPTs है, ऑडियो, वीडियो और द असेसमेंट एज वेल, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक एज वेल, राइट। जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तब वो जाकर के हमारा ये सब चीजें हो जाती हैं कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन के बाद उसका असेसमेंट, असेसमेंट के बाद उसमें आ जाता है फीडबैक, ये सारी चीजें, एंड हाउ टू मैनेज द प्लेटफॉर्म, राइट। सो व्हेन वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स, it becomes the study related with the learning management system or LMS. अब आता है AI powered adaptive learning. AI powered adaptive learning. It includes all the things related with the application of artificial intelligence and means the application of artificial intelligence in learning basically, right? तो इन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करेंगे, फिर देन उसके बाद मैं आपको एक LMS मॉडल पर दिखाऊंगा, ठीक है। कई सारे कोर्सेज, हालांकि मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों के साथ उसका एक प्रैक्टिकल हो जाता, लेकिन तो मुझे यहाँ पता चला कि शायद इट इज कंडक्टेड इन ए रूम नॉट इन ए लैब, तो इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत होगी। अदरवाइज कि आप उसको बहुत आराम से यूज भी कर सकते थे। Sir, if we go to know this thing, we can carry our laptops also. हाँ नहीं, अगर So you can show us on screen. हाँ नहीं, स्क्रीन पर तो हम आपको दिखाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बल्कि उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आप कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं, अपने कोर्स को कैसे बना सकते हैं, और वो आपके, अगर आप एज ए फैकल्टी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए भी यूजफुल है, एज ए फैकल्टी तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए यूजफुल है क्योंकि आपने अपना एक बार LMS तैयार कर लिया, बस आपको उसमें पार्टिसिपेंट चेंज करने हैं एवरी सेशन, बस खत्म। इस साल 60 स्टूडेंट हैं, अगले साल आपने उनको बाहर कर दिया, दूसरे 60 को एनरोल कर लिया, आपका उसमें कंटेंट बना हुआ है, और जिसको ऑथराइजेशन है, जिसको एक्सेस है, बस वही एक्सेस करेगा। ऑनलाइन उसमें नहीं है, ऑनलाइन है बट फ्रीली नहीं है, until unless you give the rights, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट इज वेरी इजी। असेसमेंट मतलब बच्चों के लिए आप क्विज बनाकर उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बताऊं कि जैसे आपने कोई क्विज बनाया, आप चाहते हैं कि आजकल आप एक सब सुनते होंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि मतलब एक क्राइटेरिया होते हैं कि उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि सबका असेसमेंट हर लेवल पे किया जा सके, स्टूडेंट का, उसकी एनालिटिकल स्किल, उसकी बहुत सारी स्किल्स जो उसमें 4-5 उसमें दी गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम उसमें बनाते हैं, राइट। अब मान लो आप चाहते हैं कि हमें क्विज बनानी है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का लेवल एक ही है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस देने हैं। आप चाहते हैं कि अगल बगल हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन भी रिपीटेड ना हो और उनमें चॉइसेस भी सफल हो जाती हैं। हालांकि ये फीचर अगर आप देखेंगे तो गूगल पर भी है, ठीक है, आप वहाँ पर भी गूगल क्विज वगैरह जो अपने जीमेल में जाकर के वहाँ पे भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। आप यहाँ मैथमेटिकल
क्विजेस बना सकते हैं, मैथमेटिकल इमेज डाल सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं और एक एक चीज उसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो I'll show you and we're moving ahead from this. So the real transformation is pedagogical, not the technological, right? So a platform can distribute content, only design can create learning, right? So design can create learning and platform can distribute the content. The platform which I am talking about, the learning management system, right? So it is accessible anywhere, anytime. Feedback to shorter cycles, making learning visible and improvable. Agency learners make meaningful choices and monitor their progress. Okay. So these are some points actually. आप ये slides मैंने उसमें already share कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं. So by the end, participants can learn, can design a connected digital learning experience, which after this workshop actually, or this 2 days, this 2-hour session. So what you can understand, you can design a part of typing, design a connected digital learning experience where you will be learning how to design, how you can orchestra, engage, personalize, govern and implement all the things with the application or with the use of the learning management system, right? So 4 capabilities for one learning ecosystem. So those 4 parts of the topic of the talk, we can say the e-learning, the flexible e-learning basically support the flexible learning, means the content which is available online, right? So flexible learning है as per the availability of your time, ठीक है, you can start learning. ऐसा नहीं है classroom teaching में क्या है कि मान लो जहाँ जाना है आपको लर्न करने के लिए 10 to 5 का टाइम है, but there is total flexibility. Suppose you are engaged anywhere between 10 to 5, then you have time in the evening or in the night, so you can open the platform, you can start learning, you can give the feedback, you can assess yourself, each and everything. स्वयं पोर्टल देखा आप लोगों ने NPTEL का, ठीक है, वो भी एक उनका भी अपना एक LMS है, ठीक है, और वो LMS के थ्रू वो सब चीजें करते हैं. बहुत सारे आजकल इस तरह के प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, ठीक है, EDX है, edX करके, तो ये सब अपने अपने सबने प्लेटफॉर्म बना रखा है. इग्नू जो यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में, उन्होंने पूरा मूडल पे बनाया हुआ है, पूरा मूडल पर है, आपको देख के नहीं लगेगा कि वो मूडल पे बनाया गया है, राइट? एंड उसी तरीके से आप अपना भी उस पर बना सकते हैं, ठीक है, सेम मैनर में. इट इज़ वेरी इजी. देन ई लर्निंग, LMS, ऑर्केस्ट्रा, evidence, gamification. हाँ, gamification is very important. Motivation and persistence, adaptive AI, personalized support. Gamification is very important thing. What do you understand by gamification? कुछ जो भी आपके दिमाग में आता हो. What it can be? Gamification. हाँ, कुछ गेम. Integrating the learning process with the game. Right. Okay. Or. Sir, it's a type of teaching strategies we can use in teaching learning process through games. Through games, right. जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बराबर बना रहे, उसका इन्वॉल्वमेंट रहे. जैसे अभी तक क्या था, ट्रेडिशनल टीचिंग में सर अधिकांशतः ये होता था कि बिल्कुल वन वे. राइट. तो गैमिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नहीं, वही है जो आपको लग रहा है, वही है. मतलब गेम आप डिजाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. क्लास में जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर. अब उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक. तो बच्चों को आपने वहां बोर्ड पे बताया कि स्टैक इज क्रिएटेड लाइक दिस, व्हाटएवर द एलिमेंट विल बी इंसर्टेड इन द लास्ट दैट कैन बी टेकन आउट फर्स्ट, ठीक है. लिंक लिस्ट है, कॉन्सेप्ट क्यू है. तो व्हाट हैपेंस इन दैट, तो मैं क्लास में क्या करता हूँ, 8-10 बच्चे खड़ा करता हूँ. तो हम वहाँ एक गेम, एक पिक्चराइज करते हैं उसको. 8 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया लाइन में, ठीक है. अब जो बच्चा सबसे लास्ट में आया ना, वही सबसे पहले बाहर आउट होगा. जैसे लिंक लिस्ट हमें डिस्क्राइब करनी है, तो हमने क्या किया, बच्चों को एक चेन बना के खड़ा कर दिया, हैंड टू हैंड दे आर स्टैंडिंग
and holding hand to hand to all. So now this is what is achieved. मतलब हमने एक गेम एक इस तरह से पिक्चराइज किया वहाँ पर, ये तो हमने फिजिकल बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे उसमें स्टूडेंट्स कैन बी इंगेज्ड इन लर्निंग। और ये बिल्कुल सही बात है कि विजुअलाइजेशन जितना इम्पैक्ट डालता है इन लर्निंग में, उतना आप थ्योरेटिकली या उनको डेफिनेशन या उससे समझाएंगे वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। और गेमिफिकेशन के भी बहुत सारे टूल्स हैं। कोई टूल कभी किसी ने कोई यूज किया हो? हाँ नहीं, गेमिफिकेशन मतलब आपको एनिमेशंस बनाने, गेम बनाना है, ठीक है। एक बहुत अच्छा टूल है और आप लोगों ने बहुत उसके रील्स और वो सब देखे होंगे, वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, बता भी दूंगा आपको, एक उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां आप जाके खुद अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वॉइस में या किसी और वॉइस में, राइट। जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपने कुछ एनिमेशन देखोगे, हाथ चलता रहता है, वो बोलता रहता है कुछ भी और वो लिखता जाएगा ऐसे ऐसे, इस तरीके के एनिमेशन, ठीक है। एक इसका है डूडली, DOODLY या DOODL, ठीक है। तो फ्री है, इसको आप जाइएगा, बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके के टूल्स यूज करके आप क्लास लेते हैं, जैसे मैं बहुत सारी लेता हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, बहुत सारे एनिमेशन यूज करता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ताकि स्टूडेंट को लर्न अच्छे से हो सके, राइट। तो डूडल इज वेरी इजी, मैं उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ आप जाकर खुद भी बना सकते हैं अपना, बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा कैनवा आपने सुना होगा, कैनवा आप लोग आजकल सिर्फ फ्लैक्स डिजाइन करने में या अपना कुछ एक वन पेज पोर्टफोलियो बनाना, वो आजकल लोग बनाते रहते हैं, पीपीटी भी बनाते हैं कैनवा में, ठीक है। कैनवा से आप वाइट बेस यूज करते हुए एनिमेशन भी बना सकते हैं, एनिमेशन, और उसमें ये सारी फीचर हैं जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें हैं, और फ्री है। स्टोरी टेलिंग है, यस, स्टोरी टेलिंग फीचर इज देयर। तो कैनवा इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल। और कैनवा आजकल एआई के साथ भी एम्बेड हो गया था। पता है आपको नहीं पता है कि हमको क्या कंटेंट चाहिए, क्या कितना कंटेंट, तब भी कोई जरूरत नहीं, आपको टॉपिक पता है। If you know the topic, it will make you each and everything for you, right? Taking references from the standard sources, latest references, वहाँ से उस कंटेंट उठाएगा और वो सारी चीजें आपकी स्टोरी टेलिंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखेगा कि जो आपको एनिमेशन में चाहिए है। तो ये गेमिफिकेशन, मैं गेमिफिकेशन का एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ टूल्स बताऊंगा, ठीक है, विच यू कैन यूज वेरी इजीली। देन AI पावर्ड, ये सब चीजें हैं, शेयर्ड फाउंडेशन, लर्निंग डिजाइन, डेटा लिटरेसी, ethics, inclusion. So higher education is moving from delivery to continuous learning orchestration. तो from delivery to continuous learning, जब हम कोई भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल करा लेते हैं या प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लर्निंग, राइट। आपके पास अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है ऑनलाइन, ठीक है, तो यू आर फ्री टू यूज टू रेफर द कंटेंट जब तक वहां अवेलेबल है, एज पर योर टाइम, राइट। तो इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग है, राइट। तो रादर देन हमने, अब मान लो मैं यहाँ बोल के जो चला गया, ठीक है, कुछ लोगों ने उस वक्त समझा, नहीं समझा बाद में, लेकिन अगर यही चीज ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप 10 बार उसको सुनेंगे, 10 बार समझेंगे, 10 बार उसमें देखेंगे, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ऑब्वियसली, राइट। सो द शिफ्ट, प्लान फॉर एविडेंस एंड रिस्पॉन्स, नॉट सिंपली कंटेंट कवरेज, राइट। सो when we talk about the continuous learning orchestration, then we talk about the content, the activity involved there, what are the evidence, means what shows the learning, and then finally the adaptation. So when we say AI adoption, then means we are talking about the adaptation of the AI tools, right? So today's learners expect flexibility without losing human connection. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ई लर्निंग में। आज के लर्नर और जो प्रीवियस लर्नर थे उनमें बहुत डिफरेंस है।
because they want all these things, the flexibility, they want the responsiveness, they want the accessibility, they want the relevant content, they are looking for it is visible, clear progress, expectation, next step, and they want connected as well. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको टीचर्स असिस्टेंस भी मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम इफ यू वांट. सो दिस इज व्हाट इज स्टडीड अंडर द कनेक्टेडनेस, राइट. सो फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ टाइम, प्लेस, स्पेस, pathways, responsive feedback when action can still change the outcome, accessible, multiple means of access, expression and participation, then relevant, authentic tasks connected to disciplinary practice, clear progress, expectations and next step and connected. So teacher presents peer dialogue and belonging as well. So this is also there. Modality is a design continuum, not a binary choice. So it should be a face-to-face, web enhanced, it is blended, high flex, fully online. So choose the mode that best supports the learning outcome and learner context. So these are the different modes depending on the user's choice कि वो किस mode में learning चाहता है, right? So face to face मतलब जो traditional way of learning और teaching learning है, right? So align before you automate the outcome. What should be the outcome? What are the evidences? What are the experiences? So what activity produces the evidence and what tools reduces friction or improves feedback, right? So what are the tools? So these are the things which are required before automation. So design learning beyond the classroom. So e-learning is a designed experience, not content placed online. तो जब हम बात करते थे ना ई लर्निंग, व्हाट इज द ई लर्निंग, तो आपने कहा कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये है वो है, ठीक है, बट दिस इज फॉर्मली यू कैन से ई लर्निंग इंटीग्रेट्स द डिजिटल रिसोर्सेज एज वेल एज द इंटरेक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक. सो ऑल दीज four things together describes the total e-learning environment in which the content is also available as well as the interaction, मतलब teacher learner interaction, learner to learner interaction, and learner and the interaction of the learner with the content. So not only the interaction of the learner with the teacher, but there is a interaction between learner to learner as well, right? So you can interact with the peers as well, means जो आपके साथ learn कर रहे हैं. So it can be useful interaction. Sometimes the interaction, because क्या होता है कभी कभी groups projects मिलते हैं, ठीक है, capstone projects होते हैं online में, तो उसमें क्या होता है कि you can be asked to make a group with your peers, and again there is interaction among the peers, so you can create a group and you can be asked to complete a capstone project. I'm talking about the technical type of, even in non-technical courses, capstone projects is also there, right? So blend synchronous energy with asynchronous depth. So synchronous can be best for dialogue and clarification, demonstration and coaching, social presence and momentum, rapid decisions and critique. Asynchronous can be best for reflection and analysis, practice at an individual pace. Then accessible participation windows, documented peer exchange. So before moving ahead, let me just show you a video of e-learning of 2-3 minutes video, ठीक है? Worried about her KPI this month. Still, she has to go to her company's annual one-week sales. This is Mary. She is worried about her KPI this month. Still, she has to go to her company's annual one-week sales training in New York. This is Mark. He pays out again and again to teach his sales team how to offer product updates to their clients. Mark faces a decline in sales every year when his team is out of the office studying hard in New York. They are
studying hard, right? Well, Mark, we have some bad news for you. E-learning, which means learning delivered electronically, can totally overhaul this entire situation. And it takes just 2 steps to launch e-learning in your company. The first step is to create engaging online courses and quizzes. For the second step, you upload courses to your learning management system, or LMS, and assign them to learners. Employees can take these courses from any device, and you can easily track their progress. There are different forms of e-learning to choose from. Synchronous learning is, for example, a webinar led by an instructor. It needs all the participants to be available online at the same time. Asynchronous learning allows learners to access information whenever they need and to be more independent in their learning process. Blended learning is a mix of synchronous and asynchronous formats. This approach is even more flexible and can be easily molded to any learning goal. In micro-learning, all materials are split into short and easy-to-digest learning bites. Employees can take 5-minute courses on their mobile devices anytime they need. Virtual reality in e-learning allows learners to develop skills while gaining experience in a risk-free environment. E-learning helps everyone achieve their goals quicker and easier. Now, Mark doesn't pay for transport and accommodation for his team and instructor. It takes just a few days to launch a new training program, and Mark now knows exactly how well Mary has studied. And Mary has started selling more and was even promoted as she spends more time working, not training, retains information better, and can always refresh her knowledge. Well, here is Mark again. He seems to be much happier and more successful now. He chose the right way to develop his team and the right tools for e-learning. iSpring, the right software for e-learning. So this is taken from iSpring. Video is already available, right? So iSpring, yes. You want to ask? Okay. So iSpring basically provides e-learning platform and a lot of other things, right, related with the e-learning. So backward design turns technology choices into learning decisions, so it can be outcomes, evidence, experience, and tools. So define observable performance, decide what will demonstrate learning, design, practice, interaction and feedback, select the minimum useful technology. AI powered का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज AI से ही करेंगे. You will have to involve your human intelligence there, right? You cannot totally rely on all the things what is actually developed or given by an AI tool. You will have to check it whether it is correct or not, or it is useful or not for the purpose for which actually you have generated the content, right? So learning deepens where 3 forms of presence overlap: teaching presence, social presence, and cognitive presence. And this is within the deep learning, right? So the 3 presence: teacher presence, social presence, and cognitive presence. So design implication: be visibly present, create purposeful dialogue, require meaning making, and connect ideas to practice. So whatever the ideas you have, that is actually connected with the practicals, right? Design for variability from beginning. So engagement for offer meaningful choice, relevance, collaboration, and appropriate challenge, representation, action, and expression. So accessibility is a quality attribute, not an accommodation added later. So accessibility is a quality attribute that is actually added with. Okay? It should not an accommodation later on. So micro learning works when each unit closes a complete learning loop, starting from focus, then learning, then do means the actions, then checking means the immediate feedback,
and then finally the connect. So link to the larger course. So short does not mean that it should be equal to shallow. So the unit still requires purpose, action and feedback. Each of the unit which I am talking about, that it should have a complete purpose, the actions and the feedback mechanism should be there. So assessment becomes learning when feedback changes the next attempt. एक टर्म आता है AI में और मशीन लर्निंग में, reinforcement learning. So there are three types of things like machine learning, then deep learning, and then the reinforcement learning. So reinforcement learning is actually, you can say informally, that it is feedback based learning. Whatever the feedback is actually received by the agent, it improves itself and again give the better result or better output. यहाँ पर भी वही चीज है, means feedback plays very important role. Positive feedback, negative feedback, both kinds of feedback plays an important role. Positive gives the motivation and negative gives or suggests for the improvement, right? So elicit means the collect a question, task or performance, then respond accordingly to the feedback, reteaching or extension, and there is a reattempt, apply insight to a new attempt, interpret what does the evidence show. So this is what is the feedback loop, in which you can see there the elicit means collection of the feedback, then reattempt for making improvement, then interpret means what the feedback actually interprets, and respond accordingly means the action taken onto the feedback. Turn the LMS into a learning operating system. Now this is what is the second part after the e-learning, the LMS. Basically the platform which is actually used within the e-learning. So that is why you can say it a learning operating system. So let me show you a video of LMS, right? And then I'll tell you what the LMS. What is an LMS? LMS stands for Learning Management System. An LM... नहीं हो गया वो, एक्चुअली मैंने उसको मोड से नहीं उठाया. What is an LMS? LMS stands for Learning Management System. An LMS is a web-based system that helps you automate employee training. What can I do with an LMS? With an LMS, you can gather all your learning materials in one place and make them available to all the learners in just one click. You can create a different group of learners according to their function or job position. Now you can assign them a single course or test, or a whole series of materials called a learning path. And easily track each learner's progress to encourage the leaders and help your team develop faster. Sounds good. Still, the question is, who needs an LMS? A wide range of different organizations, from high schools to large corporations, can benefit from using learning management system by reducing expenses for things like classroom rental, transport and accommodations, instructor salary, and learning material printouts. What else can an LMS help me with? The right LMS helps you save time, set unified learning standards, and assess and develop employees' knowledge regularly. What kind of business needs these benefits? Large, medium, and small. Any kind of business can benefit from an LMS. What benefits will my team get? Access to learning materials anywhere from any device. And an unlimited number of times to refresh knowledge anytime they need to. As well as an opportunity to collaborate with each other during the learning process. And what does all that amount to? Loyalty,
motivation, and strong skills. iSpring, the right LMS to streamline corporate training. So, iSpring also provides its own LMS. Moodle is one kind of LMS. So, LMS is basically, I think everybody would have understood what actually the LMS. This is what is, you can say, the backbone of the e-learning, right? So, it is the platform where each and everything related, whatever the features of the e-learning are actually achieved, all these are achieved by this learning management system, right? LMS. So you can organize, you can communicate, it can be used for assessment, it can be used for observing, and it can be used to integrate, right? So LMS is the learner's map, workspace, feedback channel, and the record. Predictable course architecture lowers cognitive friction. So you can start here. You can plan it in the week, means module per week or the weeks per module. Community, you can make the groups as well for the discussion among themselves. You can collect the feedback. You can organize accordingly, right? And progress, and you can monitor the progress of the learners as well, means how much part has been completed and at what level they are. You can assign the grades accordingly, right, as per their progress. So learning analytics should trigger questions, not verdicts. So a signal specify a pattern appears, question, what might explain it, context, so actions and the review, right? So LMS is having the content tools, analytics. It gives the analytics as well. It can be used for the assessment. It can be used for information systems, reports, right? So each and everything. इसके बाद में I'll show you the Moodle LMS which I am using, okay? And where you can see. When you can draw the graphs as well, means कितने scores पर कितने student ने कितना score achieve किया, ठीक है? How you can design the quiz, you can make the question bank. आप चाहते हैं कि 20 students को वही question repeat न जाए, you can make a question bank of 100 questions or not repeated questions will be given to everybody. So 100 questions are to be prepared as per the Bloom's taxonomy. So that सबका लेवल एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि कल को कोई स्टूडेंट क्लेम करे आकर के नहीं उसको तो आपने इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मुझको आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए, ठीक है? So this is what is the reason why the Bloom's taxonomy is actually important while designing the questions or putting the questions in the question bank, right? So let me show you the LMS. इसके अलावा Moodle के अलावा एक Profs भी एक है LMS, Profs के अलावा एक Ultra LMS है, ठीक है? कई सारे LMS है लेकिन Moodle सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है? तो फ्री है, वेरी इजी टू यूज है, राइट? तो ये यूनिवर्सिटी का LMS है। सर ये भी Moodle पे ही बना हुआ है? हाँ, पूरा Moodle पे ही कॉन्फ़िगर है।
So ये मेरा डैशबोर्ड है Moodle पर, and these are my courses actually which I teach, I have prepared for, right? And ये सारे courses you can also make course आपके लिए जो मैंने बनाया, मैंने सोचा आपको रजिस्टर भी कराऊंगा, लेकिन बाद में पता चला कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा कोर्स आपको दिखाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स का। आप उसके टेक्निकल पार्ट में मत जाइएगा, ठीक है? राइट, सो यहाँ पर क्या है कि कोर्स का इंट्रोडक्शन, यू कैन पुट द इंट्रोडक्शन यहाँ पर, जो भी आपको अनाउंसमेंट डालना है यू कैन प्लेस इट, जरूरत नहीं है। आई थिंक एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, और शुड आई यूज द माइक? चल ठीक। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं एक कोर्स डिजाइन करके भी आपको दिखा दूंगा, ये अभी ऑलरेडी डिजाइन्ड एक कोर्स है। सो यू कैन प्लेस द अनाउंसमेंट। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट मोड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? ये एडिट मोड ऑन कर लिया, नाउ इट इज एडिटेबल। सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू हियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कभी क्विज ली है और मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पर क्विज करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि उनको कंटेंट ना दिखाई दे, तो मैंने वो उस कंटेंट को हाइड कर दिया, सो दैट दे कैन नॉट रेफर द कंटेंट व्हाइल अपीयरिंग इन द क्विज, राइट? तो यहाँ पे इसलिए हिडन किया हुआ है, बट यू कैन मेक इट अनहाइड, राइट? सो द टॉपिक्स, सो नाउ द टॉपिक्स आर easily visible to them. They can see the topic from here and they can download accordingly, right? So for example, if you click on it, so it is downloaded, right? So these are some slides from में है, right? So इसके अलावा इसको आप book form में भी show करके दिखा सकते हैं। And this is a quiz which is actually designed for them, हालांकि ये last year का है। Now in quiz 1 you can see how many students attempted the quiz. So there were 84 attempts, so 84 students actually attempted the quiz, right? You want to see उनके grades, right? Preview, अगर आपको